I seek the shelter of Almighty Allah from this permanent devil Satan. The name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Exalted Almighty Allah, the creator of creations, the Lord of the universe, the eternal merciful, the especially merciful, the Lord of the doomsday, and whatnot. After this, may peace and blessings of Almighty Allah be upon the last messenger of Allah, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who just guided us to the right path and showed us the path to Jannah. And may Allah's mercy and peace be upon all the family members and companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I ask Allah to guide us to the right path, to give us the place in the Jannah He wants. After this, I welcome you all with the Islamic greetings. Simply I can say Assalamu alaikum wa rahmatullah, which means may you all be under the protection of Almighty Allah and may Allah's mercy be upon you. As yesterday I just give a word to you that tomorrow we will be discussing on the most important topic, that is communication skills. How one can just improve one's skills, how one can just communicate to others in a better way than he is just communicating now. So I have just chose 4 points through which we can just get the we can say point of how we can just improve, how we can improve our communication skills, how we can just improve to get stood in front of the audience without any hesitation. यानी कि हम दूसरों के सामने कैसे खड़े हो जाए, हम दूसरों के सामने किसी भी डर के बगैर दूसरे के सामने बात करें, कैसे हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें, कैसे हम एक बड़ी ऑडियंस की जो जमात हो, एक बड़ी असेंबली हो, उसके उन सब के सामने खड़े होकर जो है हम बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के, we can just talk before them, we can deliver the lecture, we can just play the dramas, we can just do anything which we are just like to do, we just like to do before the audience. Whether you are going to play a drama, whether you are just going to act in some kind of play before the audience, or you are going to deliver any topic before the audience, whatsoever it is. So you want to just to deliver that, you want to do that without any hesitation, without any hesitation. So how can we do that? There are the 4 steps. There are many points which we can discuss on this, but I have just chosen these 4 points which you have to just indulge in, and you have to just create in yourself, and you just have to follow these 4 steps in order to get hold on your communication skills, in order to improve your communication skills. The first point which I am going to discuss is that immersion. What is it? Immersion. What does immersion mean? Immersion means that you have to just give your full effort to do what you want to do. आपका जो है अपना पूरा देना है जो आप करना चाहते हैं. Your mind, your heart, whatsoever you are going to do, whatsoever you want to be in, whatsoever you want to be good in, so you have to give everything to that.
उसके लिए आपको अपना सब कुछ देना है। सब कुछ मतलब नहीं कि आपको अपनी दौलत खर्च करनी है उसके लिए, नहीं, यानी कि अपना जो है लगाव उसकी तरफ होना चाहिए, आपका दिल भी उसकी तरफ होना चाहिए, आपका दिमाग भी उसकी तरफ। ये नहीं कि आपका दिमाग कुछ और कह रहा हो और आपका दिल कुछ और कह रहा हो, ठीक है। सो यू हैव टू इमर्ज इन दैट थिंग, you have to give full effort to that thing. In each and every aspect you have to go, you have to give full effort. You have to give full effort. That is the first point, that is immersion. Immerse. Whether you want to just to deliver the topic, just to give full effort. Work hard on that topic. In which way I will be discussing that, how we can just work on any topic that we have to deliver, or how we can just work on that. As an actor, we want to be acting in some play, and how we can give our full effort to that play, or to that we can say act. So this, the second point here, which just tells us, which just teaches us, which just makes us learn what we have to do for immersion. There is visual mental rehearsal. When you just get the knowledge of something, आपने किसी चीज़ की नॉलेज हासिल की, जो चीज़ आप करना चाहते हो, जैसे फॉर आप कहीं पे जो है किसी टॉपिक पे लेक्चर देना चाहते हो, अब उसके लिए आपको क्या करना है, विजुअल मेंटल रिहर्सल। इफ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर द स्टूडेंट्स और बिफोर द ऑडियंस, सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज इट इन योर माइंड, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे, व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट टुडे, कि आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या बोलना है मुझे, ये आपको दिमाग में इमेजिन करना है। यू हैव टू विजुअलाइज इट मेंटली, मेंटल रिहर्सल करनी है। रिहर्सल का चीज माना, शाबाश, रिहर्सल बोलते हैं हम एक्चुअल प्ले करने से पहले अपने आप के साथ रिहर्स करना, यानी कि शाबाश, प्रैक्टिस करना। ये कौन सा मसला है, रिहर्स करूंगा, एक्चुअल प्ले करने ब्रो, एक्चुअल लेक्चर दिन ब्रो, पान प्रैक्टिस करने अलग, दैट इज रिहर्सल, दैट इज। So you have to do what's your, you are going to just do, whether you are going to deliver a topic, whether you are going to act in some play, what's your you want to do, you have to first visual mental rehearsal. You have to do visual mental rehearsal, that you have practiced it, you have just got the knowledge and you know what you are going to do. Now you have to visualize it in your mind. आपको आंखें बंद करनी है, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, जो मैं कल भी बोल रहा था, एक लंबी सांस लो, आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो व्हाट यू आर गोइंग। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू बी ए न्यूज एंकर, दिमाग में लाओ कि जो खबर है किस तरह से मुझे बोलनी है, अपनी दिमाग में आप इसको क्या करोगे, प्रैक्टिस, आंखें बंद करके, व्हाट यू आर गोइंग, जस्ट क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, think that you are going to introduce yourself, visualize your introduction, what things you are going to, it is not a joke, so don't laugh. What I am just expressing before you, take it serious, because if you follow these points, I always say the points which I am discussing, these are not just that I am saying and it is just for just, and I say यूं ही चलो बोला सर ने क्या बूझ एक कंत बे कंत्रो, नहीं, you have to follow these. If you want to speak without any hesitation, to speak fluent before the audience, before your friends, to interact fluently in English, it does not mean only these 4 points are only to speak English fluently. No, what's your skill you want to just get in yourself, you need these 4 steps in each and every aspect. If you want to be a science teacher, you need these 4 steps. If you want to be a history teacher, you need these 4 steps. If you want to be a computer operator, you need these 4 steps. So this is not only for English language. English language is also a communication way. This is the means of communication, but there are skills, different kinds of skills. Technical skills are there, and teaching skills are there. In each and every aspect, you need these 4 steps. So be serious about this. Okay, so visual mental rehearsal is the important thing here. What's you are going to do before getting up in front of the audience, before starting your interaction, before starting your communication with others, just visualize what's you are going to do in your mind. Do the rehearsal in your mind. अपने दिमाग में इसकी प्रैक्टिस करो, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप क्या बोलने जा रहे हो, क्या क्या बातें आप करोगे। जब आप ये विजुअलाइज करोगे ना, when you just get stood before the audience, automatically what's your you visualize it in mind, it will just come
on your tongue. You will start speaking those things which you visualize it, which you just rehearsed in mind. जो आपने दिमाग में रिहर्स किया, प्रैक्टिस किया, ये ऑटोमेटिकली आपकी जुबान पे आएगा. समझाया? हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका जवाब नहीं आ रहा है. ये खाली मुंडी हिलाने से नहीं चलेगा, आवाज मुंह खोलो. अच्छा, नाउ प्ले. नाउ प्ले. व्हाट डज प्ले मीन? खेलना. सी, if someone wants to learn to play cricket very good, in well manner, can he just learn this playing cricket only thinking in mind? अगर कोई क्रिकेट खेलना सीखना चाहता है, अब वो देखता है या सोचता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है, बस सिर्फ सोचेगा, वो खेल पाएगा? Something extent, yes, something extent. But the level he wants to be in the playing cricket, he will not get such kind of level. जो लेवल चाहता है कि मैं विराट कोहली जैसा खेलूं, मैं बाबर आजम जैसा खेलूं, जो भी है, हाँ, तो वो लेवल सिर्फ सोचने से नहीं आएगी, या बाबर आजम को खेलने से, उसको खेलते देखने से नहीं आएगी, विराट कोहली को खेलते देखने से नहीं आएगी. हाँ, if he is just watching the cricket match, only watching, he is not practicing. Until one practice, if you want to be a good speaker, you will not become the good speaker only by listening the speakers who are the good speakers who have just made their name in speaking. No, यानी कि आप गुड स्पीकर सिर्फ ऐसे नहीं बन सकते कि आप यूट्यूब पे जाओगे या टीवी पे सिर्फ जाओगे, देखोगे कि जो भी गुड स्पीकर से जिन्होंने अपना नाम स्पीकिंग में कमाया है, उनको देखने से आप गुड स्पीकर नहीं बनोगे. हाँ, समथिंग एक्सटेंट यू विल गेट द आइडिया how you would be a good speaker, how you can become a good speaker, but until you practice speaking, जब तक ना आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे, तब तक आप गुड स्पीकर नहीं बन सकते. आप सिर्फ देखोगे, पढ़ोगे इसके बारे में कि मैं कैसे गुड क्रिकेटर बनूंगा, कैसे गुड फुटबॉलर बनूंगा, कैसे गुड हॉकी प्लेयर बनूंगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खाली देखने से, खाली सोचने से, खाली इसके बारे में पढ़ने से आप एक गुड स्पीकर नहीं बन सकते, आप एक गुड क्रिकेटर नहीं बन सकते, आप एक गुड फुटबॉलर नहीं बन सकते. सो इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, if you want to be a good speaker, if you want to be a motivational speaker, you have to practice for that. That is play a game with this. Play a game means you just immerse it, you get the knowledge, you immerse yourself in that field, then you visually did the mental rehearsal. In your mind you imagine whatsoever you have just got the knowledge about the very thing, then you visualized it in your mind, you rehearsed it in your mind, then you have to play it. You have to play it means you have to practice it. You shouldn't ask such a gundan, your karibalt, your lagos, chakna. You have to practice it. कोई भी चीज, मैंने पहले ही बोला, जो ये 4 पॉइंट्स है, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं है, एक गुड स्पीकर बनने के लिए नहीं है. फॉर एवरीथिंग, कुछ भी आप जिंदगी में करना चाहते हो, ये 4 पॉइंट्स यू हैव टू जस्ट फॉलो. सो द थर्ड पॉइंट विच आई वाज डिस्कसिंग इज प्ले गेम. प्ले. So what here play game means, you have to practice. You have to practice. Here we are going to learn English language. We are going to learn how to speak fluently and grammatically correct. It can be only achieved by one thing, that is playing. That is, you have to practice much and more. The time you get much, you have to spend it in practicing, in speaking English. Not only reading, not only listening. Only listening and reading will not make you a good speaker, fluent speaker. The main thing after these 2 points you have to follow is you have to practice. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी पिछली बार भी मैंने जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे जो है टॉपिक दिया, उसमें भी मैंने प्रैक्टिस की बात की. कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है? जब आपको ऑडियंस के सामने खड़ा होना है विद कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ एक चीज से हो सकता है, जब आप पहले घर में या कहीं पे भी आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस के लिए, जब आपको लगता है खुद, व्हेन यू जस्ट बिकम द सेल्फ स्पीकर, जब आप खुद से अच्छे से बोल पाते हो अपने सामने, आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हो तो अपने आप से बात करते हो. जब आपको लगता है कि ना मैं खुद से अच्छे से बात कर पाता हूँ, तब आप विद कॉन्फिडेंस ऑडियंस के सामने खड़े हो सकते हो. समझाया?
तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, व्हेन यू प्रैक्टिस। ये भी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए नहीं है, आपको साइंस में टीचर बनना है, साइंस पढ़ाना है, या कोई भी साइंस में कुछ और पढ़ाने के बगैर फील्ड चूज करना है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी के लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है। जो लास्ट ईयर एमबीबीएस में होता है 6th ईयर, वो क्या होता है? इट इज फॉर प्रैक्टिस। अगर उनको प्रैक्टिस नहीं की कराई जाएगी, क्या वो गुड डॉक्टर बन सकते हैं? कल वो पेशेंट का इलाज सही से कर सकते हैं? हर एक फील्ड में ये चीज जरूरी है। आपको इंजीनियर बनना है, आपने किताबी छान मारी, पढ़ी, रात दिन आपने एक किया, आपने किताबें पढ़ी, लेकिन आपने कभी भी जो भी जिस सब्जेक्ट रिलेटेड आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो भी है, तो जब तक ना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई जो है गाड़ियों का मैकेनिक बनना चाहता है, मैकेनिकल इंजीनियर, अब क्या है, इसने पढ़ा गाड़ी को कैसे खोलते हैं, इंजन को कैसे, यहाँ पे ये इशू होगा तो कैसे ठीक करते हैं। क्या जब तक ये इंजन को सामने उठा के खोलेगा नहीं, तब तक इसको आएगा इंजन ठीक करना? खाली पढ़ने से तो नहीं आएगा ना, या पढ़ाने से तो नहीं आएगा ना। जब तक इसको इंजन सामने नहीं दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा खोलो यहाँ पे ये, फिर ये, तब ये दोबारा दूसरा इंजन भी वैसे ठीक कर सकता है। सो द मेन थिंग विच आई एम गोइंग टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड इज you have to practice. This is the most important thing. You have to practice. And now you started practicing the things, whether you started practicing speaking English, whether you started practicing teaching something. Now at first you will make the mistakes because you are learning. During learning something you will make the mistakes. जब आप कुछ सीख रहे हो तो आप गलतियां करोगे, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं जो है बोलने जा रहा हूं किसी के सामने या पढ़ाने जा रहा हूं तो मुझे गलतियां नहीं होगी, स्टार्टअप में गलतियां होगी। तो यू हैव टू रिव्यू दैट फर्स्ट, जस्ट लाइक दिस टाइम व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग माय वीडियोस, डू यू नो दैट? इसलिए यस, when I just record my videos, after that I listen my topics, not only to upload on YouTube or on Facebook. The most important thing that I want to do is, after recording my video, that is I am reviewing my lecture. Have I done any mistake anywhere? And next time I am trying to rectify that. I am trying to get rid of that mistake. And that is what you have to do. That is what I am going to make you understand what you have to do. When you just start practicing, just to say your friend, or if there is your sister, your brother at home, ask him or her, or you can just put phone, you can just get 150 rupees this stand, tripod, 100 rupees. There are many prices available of these tripods. You can get one, and then you can just take your phone on the stand and record your lecture, and after that review it. Where in which sentences I have made the mistake, is there any grammatical mistake, is there any word error whatsoever, and try to get rid of that. And I believe and I surely say that one time will come. It does not mean that you will just practice 2 or 3 days and after 3 days you will be a good speaker, you will be a fluent speaker. No, it takes time, because just like when you sow a seed in the soil, आप जो है जमीन में बीज लगाते हैं, ब्यूअल या थिसवनांच, तो क्या आज आपने बीज बोया, will it just grow up tomorrow? No, it takes time. You have to water it again and again. You have to water it again and again, and the time will come, its own time will come, when it will just break into the buds from the soil. जब ये जमीन से बाहर निकलेगा, ठीक है? तो ये नहीं है कि आपने आज बीज बोया तो कल आप इसको जाओगे कि इसका ये जो है जमीन से बाहर क्यों नहीं निकला, इसके बर्ड्स क्यों नहीं निकले, फ्लावर्स क्यों नहीं निकले। नहीं, हर एक चीज को अपना टाइम होता है। सो when you practice, you don't have to concentrate on that. I am not just becoming a good speaker, I am not able to speak fluently, I have been practicing more and more. No, results will come automatically when you practice. You don't have to think about the result. You don't have to think about these two things: play and review, play and review, practice and review, practice and review. Practice करो और खुद का एहसाब करो, which I am always telling you. When I talked about in last lecture about the personality development, I asked you to do the daily journaling. Daily journaling.
That is here. Review. Review your whole day at night before going to bed. जब आप सोने जा रहे हो अपने आप का एहसाब करो, अपने आप का एहसाब, मैंने दिन भर क्या किया, मुझे क्या करना था, क्या रह गया. हाँ, जस्ट लाइक दैट व्हेन यू प्रैक्टिस, रिव्यू योर प्रैक्टिस. अपनी प्रैक्टिस को रिव्यू करो, देखो, पढ़ो, लिखो. लिखने में पहली गलतियां निकालो कि क्या क्या गलती हुई मुझे. जुबानी जब आप लिखोगे कुछ पढ़ के तो गलतियां हो जाएंगी, उसके बाद आप बोलोगे उसमें भी गलतियां हो सकती है. तो उसको आपको रिव्यू करना है. और रिव्यू कैसे कर सकते हो? अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करो, अपने टॉपिक को रिकॉर्ड करो, जो भी आप करने जा रहे हो. अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, अपनी जो प्लेइंग को है उसको रिकॉर्ड करो, ताकि जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मुझे इस बॉल को ऐसे नहीं खेलना था, ऐसे खेलना था. ठीक है, अगली बार जब ऐसी बॉल आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका बैट उस तरफ से जाएगा. तो ये ओनली कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस के बाद रिव्यू करोगे. तो ये 4 चीजें जो है मेन है आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल बनने के लिए. एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगा मैं आपको. एक सोक्रेटिस की एग्जांपल है कि उसके पास, जर्मन था वो थिंकर, तो उसके पास एक स्टूडेंट मानो या कोई यंग मैन आया और पूछा कि मुझे आप बताइए कि एक इंसान सक्सेसफुल कैसे बन सकता है, या मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए. तो अनफॉर्चुनेटली जो सॉक्रेट था वो रिवर में नहा रहा था, बीच रिवर में. तो उसने क्या सोचा कि ये जो इसने सवाल पूछा एक ऑकवर्ड टाइम पे पूछा कि ये जो मैं अभी कर रहा हूं इस दौरान सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं होती, फिर भी इसने पूछा. अब इसने क्या सोचा कि इसको मैं अब ऑरली जवाब नहीं दूंगा, इसको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा. ही डिसाइडेड टू शो हिम प्रैक्टिकली हाउ वन कैन बिकम सक्सेसफुल. उसने क्या सोचा कि मैं उसको अब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इंसान कैसे सक्सेसफुल बन सकता है किसी फील्ड में. तो उसने इसको क्या कहा, जस्ट कम नियर मी, यानी मेरे पास आ जाओ. तो वो गया, कपड़े वपड़े निकाल के वो भी उसके पास गया. कहाँ? रिवर में. अब क्या है, द सॉक्रेट वॉज टॉलर देन द यंग बॉय. जो वो जवान लड़का था उससे थोड़ा लंबा था. कौन? सॉक्रेट. सो व्हाट ही डिड, he just put his arm around his shoulders and plunged him into the water. यानी उसको डुबो दिया. किसमें? बहुत कस के पकड़ के, लागोन, किसके नीचे? पानी के नीचे. अब देखो आपके साथ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस हैपन्स विद यू, व्हाट यू विल डू. क्या करोगे आप जब आपको कोई पानी में डुबोने की कोशिश करेगा बहुत कस के पकड़ के? व्हाट विल यू डू? Just try to answer. क्या करोगे? बस you will just make, or you will just take whole force of your body to get free from his arms. आप अपनी पूरी ताकत, you will just take full power to get rid, to just take out from such kind of condition, such kind of circumstances. यानी पूरी ताकत लगाओगे आप अपने आप को आजाद करने के लिए. So same thing the boy did. He just kicked him, he just knocked him by his elbows, but yet he was not able to free himself. But at last when he just used his full power, see, when anybody sees himself in danger, उस टाइम ऑटोमेटिकली आपकी जो सोचने की ताकत होती है ना कि मैं इतना कर सकता हूँ, उस टाइम उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत आ जाती है खुद ब खुद जब इंसान किसी मुश्किल में होता है. उशू, नॉर्मली आप जो दौड़ते हो आपको पता होता है कि इतना तेज में दौड़ सकता हूं, लेकिन जब अचानक आपके पीछे कुत्ता लग जाता है, जिस तरह उस टाइम आप दौड़ते हो, क्या नॉर्मली आप उस तरीके से दौड़ पाते हो? नहीं दौड़ पाते हैं. तो उस टाइम हम ऑटोमेटिक जो हमारी असली पावर है वो बाहर आ जाती है. ठीक है, तो ऐसे जब इसको पूरी तरह से दम घुटने लगता है तो ये अपनी फुल पावर इस्तेमाल करता है और अपने आप को ही जस्ट मेक्स हिमसेल्फ फ्री. देन the young boy asked the Socrates that I just asked you how I can become successful in life and you just made me to die. यानी मैंने आपसे पूछा था मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा जिंदगी में किसी फील्ड में, लेकिन आपने तो मुझे मौत के करीब किया. Then the Socrates said that this is what I was going to make you to learn practically. मैं आपको सिखाना चाहता था practically. The thing you made yourself to make free is the thing you have to do
इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। यानी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या करना है, अपनी पूरी एफर्ट, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी है। ये नहीं कि आज आप खड़े हुए, आपको दूसरों ने हंसा, someone laughed at you, just like कल रुतबा को गुस्सा आया किसी लड़की के हंसने पे, मुझे उस टाइम बहुत जो है गुस्सा आया किस पे, रुतबा पे। वाई? बिकॉज मैं बार बार कहता हूं, until you let others laugh at you, you can't become successful, you can't learn anything। जब तक ना आप दूसरों को अपने ऊपर हंसने दोगे, आप नहीं सीखोगे। जिसने ये माइंड किया कि किसी ने मुझ पर हंसा, अब मैं दोबारा खड़ा नहीं होऊंगा या मेरी इंसल्ट हुई, ये चीज, द वर्ड इंसल्ट वंस कम्स इनटू योर माइंड, यू डिस्ट्रॉयड योर कैरियर। जो ही आपके दिमाग में इंसल्ट लफ्ज आया ना, तो आपका कैरियर डिस्ट्रॉय, तबाह। इंसल्ट लफ्ज है ही नहीं। किस चीज की इंसल्ट? यहां कोई सीख के आया है? हैज एनीवन जस्ट कम विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नॉलेज फ्रॉम द वॉर्म ऑफ हिज मदर? क्या कोई अपनी मां के पेट से ही सीख के आया है सब कुछ? नहीं। एवरीवन कम्स हियर टू लर्न। देखो आप यहां सब, फॉर व्हाट पर्पस यू आर हियर? यू ऑल आर हियर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। नो वन नोज हाउ टू स्पीक properly, grammatically correct. Now you all are going to learn, so there will be mistakes. You may make mistakes. If you speak 10 sentences, among the 10 sentences, sometimes all the 10 sentences will be incorrect grammatically. कभी कभार आप 10 sentences यहाँ पे आके बोलोगे, 10 के 10 कभी कभार grammatically incorrect हो सकते हैं। So what? Let others laugh. क्या वो खुद पूरा बोलते हैं जो आप पे हंसते हैं? नहीं बोलते हैं। जो आप पे हंसते हैं, यहां पे जो भी आप पे हंसेगा, सब सीखने आए हैं ना, तो जो आप में से हंस रहा है, क्या वो खुद सब बोलना जानता है? इज ही एबल और इज शी एबल टू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट? डज ही नो हाउ टू स्पीक प्रॉपरली और शी? नो। सो व्हाट डज मैटर? व्हाट डज इट मैटर फॉर? किस चीज के लिए आप ये दिमाग में माइंड करते हो कि इसने मुझ पर हंसा? हंसने दो। किसी का हंसना आपको हार्डवर्क के लिए मजबूर करेगा। When someone laughs at you, when you just go back to your home, you will think that today when I just delivered the lecture, somebody laughed at me, some friend or some girl, some boy laughed at me. Now tomorrow I will work hard more so that I will not let him laugh at me. मैं और मेहनत करूंगा ताकि दोबारा मैं उसको अगले दिन अपने आप पर हंसने का मौका नहीं दूंगा। तो जब आप पे कोई हंसेगा तब आप और मेहनत करोगे। तो हंसने को माइंड नहीं करना है। डोंट माइंड एनीवन इज लाफिंग। व्हेन समवन इज लाफिंग एट यू, डोंट माइंड इट, जस्ट लेट इट, लेट हिम लाफ, लेट शी लाफ, लेट हर लाफ। चाहे लड़की आप पे हंस रही है, लड़का आप पे हंस रहा है, हंसने दो। माइंड ही नहीं करना है बिल्कुल भी, जो मैं बार बार आपको कहता हूं। और दूसरी चीज, जब आप खड़े होते हो, हेजिटेशन आती है, जो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी अक्सर बताता हूं। हेजिटेशन आती है, लंबी ब्रेथ लो। होता है ना, जब पहली बार खड़े होते हैं या नर्वसनेस होती है पहले कि मुझे इनके सामने खड़ा होना है, गलती हो जाएगी, तो 2-3 बार लंबी सांस लो। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ्स, 2 times, 3 times. Automatically it will give you confidence and the words will start come to the tip of your tongue. You will start speaking fluently, automatically, and it gives you confidence, it gives you strength. जब आप लंबी सांस लेते हो ना, ये आपको ताकत देता है बोलने का, खड़ा होने का, आपकी थरथराहट खत्म होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, थोड़ा हम रिव्यू करेंगे। इमर्जन, you have to just immerse in the topic, in the thing you want to just get into, जिसमें भी आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, उस फील्ड में, उस रिलेटेड आपको नॉलेज हासिल करनी, उसमें पूरी तरह से इमर्स होना है, अपनी फुल एफर्ट इस्तेमाल करनी है उसको हासिल करने के लिए। विजुअल मेंटल रिहर्सल, व्हाट्स एवर यू जस्ट लर्न, यू जस्ट रेड, जो भी आपने इस फील्ड के रिलेटेड पढ़ा, सीखा, अब उसको क्या करना है? विजुअल मेंटल रिहर्सल। यानी आपको कहीं पे खड़ा होना है, तो खड़ा होने से पहले अपने दिमाग में रिहर्सल करो, पहले इमेजिन करो कि मुझे क्या बोलना है, किस रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने रिहर्स किया मेंटली, इमेजिनरी, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना है। वर्बली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है,
किसी के सामने या अपने साथ अपने रूम में खुद का जो है शीशे के सामने खड़ा होना, खुद के साथ बात करना, दिस इज प्रैक्टिस, फर्स्ट प्रैक्टिस। देन सेकंड प्रैक्टिस इज बिफोर द ऑडियंस। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, इस प्रैक्टिस को पहले आपको रिव्यू करना है बार बार, तब जाके आप जो है जब लगेगा नहीं अब जो है मैं ऑडियंस के सामने खड़ा हो सकता हूँ, बोल सकता हूँ, then you can go ahead and speak in front of the audience to teach the audience whatsoever you are going to do that. But the main thing is you have to just get the knowledge, you have to read about that, you have to learn about most important thing which we have let nowadays. जो एक अहम चीज हमने छोड़ी है ना, that is reading books. हम जो है we are just stuck to the visualization of these videos, audios from the mobile phone. We don't read the books. When you read something from the book, it is just we can say hardly you can forget that. यानी मुश्किल से वो भूल जाता है इंसान। जो किताब से खुद पढ़ता है ना, किताब से वो इंसान नहीं भूलता है, याद रखना। अब किताबें ज्यादा पढ़ा करो, ज्यादा ये ऑनलाइन मत देखा करो, कोशिश करो जितना हो सके जस्ट रीड द बुक्स, रीड द बुक्स। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल चलाना छोड़ दो, नहीं, जस्ट यूज इट बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द present age, needs of this age, but don't let the thing which we have been doing since past many years, that is reading books. So you have to do that. मोबाइल के साथ साथ कभी कभार 10-15 मिनट किताबों के साथ भी दिया करो। कोई भी जनरल किताब उठाओ, पढ़ो, जिससे जो भी जिस रिलेटेड आप जो है अपना फील्ड जो आपने चुना है उस रिलेटेड कोई भी किताब उठाओ और पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद नॉलेज हासिल करके अपने दिमाग में रिहर्स करो। जब भी आप किसी ऑडियंस के सामने खड़ा होने जा रहे हो, जस्ट रिहर्स इट इन योर माइंड, विजुअलाइज इन माइंड, इमेजिन अबाउट द थिंग्स, देन प्रैक्टिस योरसेल्फ, देन रिव्यू योर प्रैक्टिस। जो भी आपने प्रैक्टिस की उसको रिव्यू करो, और तब जाके जो है विद इन सम टाइम, it will take some time, you will become a good speaker inshallah, a fluent speaker and grammatically correct speaker. Thank you. Have a great day ahead.